Yeah, good afternoon all. Morning we have seen some programming, so we'll continue the same. So I'll take you to that uh, Ripple environment. There we can see like simultaneously how to write both the coding and all and see results. Yeah, so as usually Ripple it. Okay, and we open mornings uh, experiment, program which we are doing, nog underscore test. Okay, instead of writing entire new program, it will be taking, time taking. Yeah. So here now, this, there are two things are there here actually. These things to show like how to assign variables and strings over there and how to print them actually. Now, seems it is not required also for this turtle program. If it is there, then also there is no issue, as we know this bottom section, which is printing this one, and the top one, these lines like print a is equal to 5, print a, and all these things. These will be printing these things actually. Okay, so here what I'm doing, just I'm commenting these things so that those when we comment, it won't run that line actually. Those lines cannot taken for execution. So we just run again. You can see over that in bottom section nothing is visible now, like here in previous run we have seen here 5 hello world and author number which were shown, but now it is not visible uh, because all these lines are commented means those things are not considered for execution. Okay, yeah. So this is our program which we have seen today morning. Lot of things were done here actually, like how to define function, and after that how to like make uh, uh, what is that a loops, for loops, right? Those things we have seen actually. So now we'll take it to further to show a graphic kind of thing, right, by using these turtles. Okay, what I'm doing here, uh, I'll be making okay, I'll be making here one more for statement. For count in range, let's say here 50, suppose. Not 50, let's say we start with 20, right? Then yeah, let's say this is the like if this loop it is there, then what will happen? First this loop it will be run for 4 times. First we'll start with this one. When this is first loop, when it is enters from here, it will run 4 times, come out again, second time run for 4 times, then third time, fourth time, like now here 20 times, fourth time it will run actually. So these kind of four squares, like this block, it will be repeated for 20 times, 20 times, right? So if we run that, you see just how it will be done. One second. Yeah, one second. Actually,
uh, to keep this for loop under this for loop. So we need to press tab. Yes, now you can see over here under this for loop it is there actually. That the hierarchy it need to maintain actually. Yes. So this is now 4 squares combinedly a 1 square here, and now this will repeat for again. Yes, 20 times it will be doing on that same. सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कुछ दूसरा मतलब ये 20 बार ड्रा कर रहा है या 2 बार ड्रा कर रहा है, हमको कुछ मतलब दिखाई नहीं देगा उसमें. यू कैन नॉट काउंट दैट एक्चुअली. थिंग इट इज दैट द टोटल इट इज मूविंग एक्चुअली, मूविंग फॉर 20 times that bigger size square which will be repeated, like which is combination of 4 small squares, right? So 20 times it will be done, but actually which doesn't uh, change anything which is already drawn at first run actually, right? So to visible that clearly for first time, second time, third time, we need to do something here, right? Let it finish actually. um, Even you can stop it from here, but okay, it will stop in between and it will come out, right? So now it is this process, it is continued till 20 times actually, because we wrote here this for loop for 20 times. So 20 times this entire inside this for loop it will run for 20 times actually, because here this for loop it is there. Under this for this function it is sorry, these lines, these two lines run for 20 times. But in these two lines what it is there, here in these two lines it is there that 4 times box it will be repeated. So 20 times 4 boxes will be repeated actually. That is the meaning over here, right? 20 count, how many counts are there still? Yeah, I'm going to stop this one. Okay, so now yeah, it's stopped now. Okay, so uh, now here what I'll do, I write some other functions even here. I'll make uh, distance a variable, right? Is equal to, initially let's say we'll make it 10, and angle, because every time we'll be writing distance here, right? This 100 it is distance, this 90 it is angle, right? So forward distance, right 90 degrees. So what I'm making here, distance, now onwards I'm not going to write here any number actually, which is a variable actually. This it is not fixed now, because when it is fixed, you have seen here the 20 times it is repeated on the same lines actually. So you cannot visualize that, right? So every time when it is like variable, it is variably increasing or decreasing, then we can see how 20 times it is repeated, right? So for that this one I'm writing here I'm assigning variables which starts from 10, and after that it will be increasing from 10 onwards or decreasing from 10 onwards, right? Okay, so angle which is equal to 90 degrees here. So what I'm doing here in this for loop,
distance need to be increased after each and every this one by 1. Angle need to increased for every round, need to plus 0.001 degrees, let's say 0.001, because very less angle need to be changed, suppose. Then now see, these two lines are not under this for loop actually, so we need to add these two also under the above for loop. Okay, now yes, so here each every place of 100 you need to write distance, and at 90 you need to write angle, right? At 100 you need to write distance, at 90 you need to write angle. Distance, so that which is not fixed now, which is variable actually, angle, distance, right? So uh, and finally out of the for loop, like after running the this program for 20 times, then finally when it is just quitting out of the program, it need to uh, tell me what is the print value after completion of the program, because print initially, sorry, what is the distance value after finishing the program. So initially it is 10, so after running 20 times, what can be the value here, right? Initial angle 90, after writing 20 times, after running 20 times, means incrementing 20 times, what can be the angle finally. So distance, it need to print distance as well the angle, print angle finally, right? So now at finally execution, like after finishing this, it will show you what is the final distance and angle, because it is incrementing. Initially distance, it is from 10 towards, it is incrementing 20 times, and it is 90 towards, it is incrementing 20 times each time by 0.01 degrees actually. Then if I run this one, because I have taken here 10, so it is started this one, and now you can see there uh, slightly it is increasing actually. Let's say if you it is not visualize that even 10, you can keep it some 3, right? Distance by distance plus 3, so that okay, somewhat you can see some distance over there. First time inside the for loop, yes, it is now clearly visible. So once it is finishing 4 boxes, means this for loop it is executed. Once this 4 it is execution, it will come out, increase its distance, increase its angle, then again go for second round. So that it is happening actually. So how many times it will go? It will go by 20 times, right? So here it's running for 20 times.
And one more thing, like you just keeps on observing here, and as well, I want to announce something. See, when you participate in class, don't on your videos actually, right? It may play some other irrelevant contents or something. So don't on your camera at any cost. Don't on it actually. Okay. Every time like I'm seeing here someone they are activating their camera and all, don't do that, right? So now it is finished 20 times. Now you see actually what distance we have taken initially, 10. You see here now 10, and we are increasing for each time by 3. So finally after quitting the program, it is now become 70. So it is increased from distance from 10 to 70. That's why at 10, this it is the 10 distance actually, this it is the 10 distance, and when 70, this is the 70 distance actually, right? So this is what the difference actually. And now here even angle also it is changing. So we have considered initially it is 90 degrees, and now it is become 90.02, right? Okay. So one thing, sir, actually we are waiting here for long time actually. Can we suppose if it is 20 means it is taking much long time even for 20, and someone they asked, sir, if we run for 100 times then what will happen, right? So let's say let's we work for we run for 200 times, then 200 means सर तब तक तो हमारा क्लास ही फिनिश हो जाएगा जब तक ये रिजल्ट प्रिंट करते हुए. So can't we increase its speed? Can't we increase its speed? That's yeah, we'll see now. Obviously, we can increase its speed. We'll see now. So how to increase the speed here? So actually, here you can write uh, nog underscore turtle dot speed. We can make it speed of let's say 50, right? Now just run whatever program it is there again from starting. See how fast it is now. Right? So with 50 speed, same here 70 value and 90.02, it's angle finally updated angle. So we can increase speed by just write speed and in what speed we need to mention it here, right? So now uh, I'll do with one more experiment kind of thing here. Yes, so when we increase the speed, why can't we make it 200 then? Right? If we make it for 200, then how it will show and what it will show, and we start it from 5 here with very smaller one, and here it is 1 only, let's say 0.01 angle, and we'll be running for 200 times, then how it will show. So even we can increase more speed also, right? And sometime like our graphic card version also it is required, graphic memory also it will be required to show that abruptly that speed also, right?
Now, can you see? Is it possible these kind of things to do with Arduino? No, not at all. With the available memory and all, which is not at all possible, right? That's why we need more higher range of RAM, high clock speed of processor, right? Which are not available on Arduino. That's why in your Raspberry Pi, these things are enabled to make these things happen, and that's why here on Raspberry Pi it is supported by the Python programming actually, right? I'm just making my bottom window very smaller one so that to visualize the graphic in big shape. Even I want to shift it some more down. Now my monitor size is finished, yes, and by result also out. So you can see now, is it running or finished? Yeah, it's finished. You can see here at bottom 205 is the distance, 90.2 is the angle. Is it or not? 90.2, only 0.2 it is incremented in angle. Okay, yeah, you cannot do here angle plus 1 angle plus 2, so it will be going somewhere actually, right? Angle plus 1 means very high angle variation actually. So here 90.2, because we are increasing for each and every run, it is 0.01. When you multiply with 200, it will be 0.2. So 90 plus 0.2 actually, and here it is 205. Why it is initially 5? When after running 200 times, and each time it is increasing 1, so 200 plus 5, 205. So exactly, got it or not? So this is the beauty of the Python programming. And here I'm not teaching you all like this function, that function, characters, integers. I don't want to waste your time here. That's why I thought to explain, I thought to teach you the concepts with like higher so please explain for count. फर काउंट है, सी समवन इज आस्किंग दैट सर आप यहाँ कुछ काउंट ले लिया, ये काउंट का मीनिंग क्या है? काउंट नहीं, यहाँ आप कुछ और मान लो लूप लूप लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? फिर रन करो, सेम ही आएगा, राइट? इट इज नॉट काउंट, इट यू कैन मेक इट के, सपोज लेट्स से के, यहाँ आई लिखा हो ना, वहां के लिख दो या जे लिख दो, राइट? इट डजंट मैटर, राइट? इट डजंट मैटर. सो ठीक है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ एक 100 के साथ लिख देते हैं कोड और एक बार रन कर देते हैं. He was getting doubt that सर आप यहाँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 4, वो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ फॉर काउंट, काउंट फिर काउंट कहाँ से आ गया? ये काउंट मतलब क्या है? मतलब काउंट में इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ हम लोग को, हाँ, 200 टाइम्स इट नीड टू काउंट एक्चुअली फ्रॉम 0 to 200 टाइम, मतलब 1 to 200 टाइम, राइट? वो एक्चुअली वो उसके लिए लिख रहा था मैंने. लेट्स से फॉर 50 वी रन इट अगेन एंड आई विल शो यू इट डजंट मैटर, राइट? वही आ रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन राइट एनीथिंग एक्चुअली ओवर देयर, राइट? So that's why my thing it is that if you not having any basic programming skills, right, then वो लोग के लिए सब कुछ नया ही लगेगा, right? If you don't know what is int, what is char, what is, वो सब अगर पता नहीं है तो थोड़ा लगेगा. इसलिए आप लोग को थोड़ा मतलब ब्रशअप भी करना चाहिए कि थोड़ा सा एक बोलते हैं ना बिफोर स्टडी, एक बोलते हैं ना, वो करना चाहिए कि सर अगर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा है तो प्रोग्रामिंग में क्या ब्लॉक्स हो सकते हैं, एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, राइट? वो एक बार देख सकते हैं, बिकॉज एनीवे इट इज लॉकडाउन, कुछ दूसरा काम तो नहीं ना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं, राइट? Okay, then next, so here we can do any of these things with like you can experiment now, lot experiments here. It's up to your imagination. You can do over there, right? Not only this one, you can do lot with as you think. Okay, so now we'll go with next kind of
blocks, right? Let's say, because I am going my intention. See, I am not changing. I am not diverting on my things. Actually, what is that? I am keeping our applications in mind. I am taking the Python programming, not taking the Python programming to like IT professionals, right? वो उस चीज में मुझे जाना नहीं है, because I am not making here any scientists, right? I am going to teach to technician people, right? So उनके लिए मुझे इतना ये है कि when they club 4 Arduinos, they are installed for different things, and all of them they club to a gateway module which is by Raspberry Pi. देन रास्पबेरी पाई के ऊपर क्या होना चाहिए? तो इसमें एक मेन चीज है, फर्स्ट आपका ग्राफिक्स का चाहिए उसमें, तो कि कैसा कैसा ग्राफिक्स, मतलब एक चीज को कैसा शो ऑफ करना है एक्चुअली उसमें। एंड सेकंड थिंग चाहिए हम लोग को कि या लाइक शेड्यूलिंग, जैसा कि ऑन लाइक अप्रैल 1 what is the data, April 2 what is the data, April 3 what is the data, on Monday what it is happening, on Tuesday what it is happening. So calendar things actually. So here next I am going to show you the calendar things, how to handle calendar things in Python. Okay, home, right, और न्यू। अब इस समय में मैं क्या ले रहा हूं कि पाइथन विद टर्टल का जरूरत नहीं है मुझे। पाइथन विद टर्टल से क्या फर्क है पाइथन का, वो आपको फर्स्ट आई वांट टू शो यू। लेट्स से हियर calendar test, suppose, right? Create. Sir, difference क्या है दोनों में? That we'll see. Just let it start. Have you like seen any difference between these two, Python with turtle and Python without turtle? मतलब graphic without graphics? Yes, exactly. Here you don't, we don't have here white window. यहाँ जो सफेद वाला विंडो था ना, like to show graphics, which is not there here. One side it is blue one, and next side it is black one. At blue one you need to write your code, and at black one you see your results, right? यहाँ कोई ग्राफिक्स है ही नहीं, फिर तो क्यों, क्या जरूरत है फिर वो इनको देखने का, मतलब व्हाट इज दैट, टू सी ग्राफिक्स, राइट? यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो सब कुछ मतलब इसमें दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोग्रामिंग। सो इंपोर्ट calendar, right? Import calendar. Next, कुछ ये दिख रहा है, एक मिनट। वन सेकेंड, ये कुछ लाइन दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं कुछ इश्यू है क्या। प्रिंट कैलेंडर डॉट वीक हेडर, मतलब जैसा हम देखते हैं ना, वीक हेडर विथ लेट्स से 2। यस इट्स रनिंग, ओके। मतलब कुछ अंडरलाइन दिख रहा था ना, समझ रहा था कि कुछ फिर नया वर्जन यूज करने से कुछ प्रॉब्लम आया क्या। ओके, सो हियर इंपोर्ट कैलेंडर, मतलब कैलेंडर को हम, कैलेंडर एक फंक्शन है which was written by the Python developers, right? Python को जो डेवलप किया वो एक कैलेंडर का फंक्शन को लिखा है, एंड आई एम यूजिंग दैट फंक्शन नाउ, राइट? जैसा मैं वहां nog अंडरस्कोर टाइटल, दैट इज my developed one, nog अंडरस्कोर टाइटल dot speed, when it is speed then it access the speed of their library,
the Python developers library. So what I am doing here, calendar, in calendar I am using the week header function. So week header, it is actually week में जो days होते हैं ना, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? So ये टू क्या है सर फिर इसमें, ये टू क्या है? Let make it 3 and you see, आप खुद ही समझ जाओगे what is 2 and what is 3. समझ में आया अभी? मतलब how many letters to show, सिर्फ एक या दो या तीन, राइट? गॉट इट और नॉट? जो वीक हेडर में जो मतलब कितना डेज शो करना है आपको, राइट? देन नाउ विल सी, एक एक एक्सेस करते हैं, सेम प्रिंट, मतलब अभी एक मंथ पूरा, एक मतलब सर हमको ऐसा एक वीक हेडर नहीं, एक पूरा महीना का कैलेंडर चाहिए, मान लेते इसी महीना का कैलेंडर को एक्सेस करते हैं, तो कैसे एक्सेस करना है इसको, राइट? सेम print calendar डॉट मंथ, महीना, एंड उसमें आपको दो फील्ड चाहिए, कौन सा महीना चाहिए आपको, कौन सा महीना चाहिए और कौन सा साल का महीना चाहिए, क्योंकि हर साल में महीना महीना रहता है। एक्चुअली 2002 में भी है, 2020 में भी है, 2022 में भी रहेगा। सो 2020 का लेट्स से अप्रैल मंथ, मतलब 4th मंथ, राइट? जस्ट गॉट इट? आ गया कि नहीं देखो एक बार। तो आज डेट कितना है? 25th। सो 25th सैटरडे है कि नहीं? मतलब ये करेक्ट है या रॉन्ग है? राइट, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट, राइट? सो कुछ नहीं, आपको जस्ट यहाँ कैलेंडर डॉट मंथ, आप यहाँ वीक हेडर या कैलेंडर डॉट मंथ, राइट? सो पूरा महीना को आप एक्सेस कर रहे हो। मतलब कभी क्या होता है कि पूरा साल को एक्सेस करेंगे सर, अभी आप मतलब एक अप्रैल महीना का ही नहीं, पूरा साल का कीजिए सर। नहीं तो सपोज मान लीजिए एक और कर लेते हैं, सपोज कि सर यहाँ 2022 का 2020 या लाइक, नहीं तो 2020 का 5th महीना को दिखा दीजिए, मई को, क्योंकि अभी तो चल रहा है तो शायद ये अंदर अंदर कहीं स्टोर्ड है होगा या जो भी है, राइट? It's May month actually, right? And even you can see here 22 also, 2022 May also, right? May 2022, right? और मैं इसको ऊपर में मंडे ये सब कुछ निकाल देता हूँ सपोज, तो जस्ट इसको एक्चुअली वीक हेडर को आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट, वेयर इज दैट, या then you run just you won't see that Monday Tuesday actually, okay, right? Only calendar you can see over here, right? अभी कोई बोलता है कि सर ऐसा नहीं, हम एक्चुअली ना we do one thing, just a comment here before that, you just access the complete year calendar, print calendar डॉट कैलेंडर, क्योंकि अभी कोई मतलब ये तो पूरा कैलेंडर ही करना है ना हम लोग को, मतलब पूरा साल का करना है ना, सो कैलेंडर, राइट? देन ईयर, यहां आपको इमीडिएटली जैसे जैसा व्हेन यू राइट दीज थिंग्स, राइट, इट विल शो यू, it will show you what to keep here, what is the actual format, right? So वो सब आपको दिखेगा actually, right? So here let's say 2020, got it? So complete year का कैलेंडर यहां आ गया, complete year calendar, this one, from January, February, March, April, May, June, July till December. Got it or not? So how cool is this with single statement? अभी ये दोनों है ही नहीं इसमें, ये दोनों है ही नहीं, आप बोल नहीं सकते कि ये दोनों लाइंस है। ये एक्चुअली व्हेन यू कमेंट दीज थिंग्स, इट डजंट मीन, मतलब उसका मीनिंग है कि आपको वो लाइंस एग्जीक्यूशन में लेगा ही नहीं उसको, राइट? इवन मैं मतलब सपोज इफ आई राइट हियर, सपोज Nagendra, suppose if I write Nagendra here and if I start running this one, it will show me error, right? Somewhere, yeah, देखो कुछ तो प्रॉब्लम है, which is Nagendra is not defined,
नागेंद्र इज नॉट डिफाइंड जितना तक, और इसमें ब्यूटी एक है, देखो एक बार एक्चुअली जितना तक इससे हो जाएगा उतना वो कर लेगा, जितना करेक्ट है उसका रिजल्ट आ जाएगा, जितना रॉन्ग है उसका रिजल्ट रॉन्ग बताएगा। देखो एक बार, लाइक विच इज नॉट द केस विथ अदर प्रोग्रामिंग। With C program, if anything is gone right, if anything is gone wrong, right, it won't show you the complete result. It will withhold the complete result actually, right? So here नागेंद्र मतलब वो actually वो wrong, मतलब कुछ वो undefined बता रहा है actually. So what I do here, if I comment it, then 1 second. If I comment it, then वो उसका मतलब कि उसको एग्जीक्यूशन में लेगा ही नहीं। जब उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेगा, here you can't see this error actually. Now see, is there any error? No error. You see here now, no red marks any. That means it is not taking into consideration. It is not taking for that into execution consideration. So here you have to remember that when hash is there, then it is commented. Commented means which is not taking for execution actually. Okay. So here, like you can see any calendar over 2020 or 2050 also even, right? 2050 सर जब तक रहेंगे, कोरोना इतना मतलब ये चल रहा है तेज, तो जब तक रहेगा दुनिया, जस्ट भगवान को प्रार्थना करो, नथिंग एल्स वी कैन डू, राइट? ओके, सो एक्चुअली दिस इज द केस है नाउ। with single statement, with single line, we are able to access the complete year calendar here or complete month calendar here. So when you are handling the things in IoT, because mainly those are time based things, so with of much effort, with easy kind of things, we are able to access the calendar days, actually calendar things, right? So that is enabled by the Python over Raspberry Pi. So यहाँ हम लोग देखने से Arduino का कुछ strong points Arduino के साथ में है, और Raspberry Pi का कुछ strong points Raspberry Pi के साथ में है. So you can't do this kind of things in Arduino. आप Arduino में timing things को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर देयर एक्चुअली इन आर्डिनो, राइट? थिंग इट इज दैट सिर्फ वो इतना जानता है, मतलब वहां से सेंसर से रिजल्ट, मतलब सेंसर से इनपुट को लो और उसको बोर्ड के ऊपर लेके आके फिर आउटपुट में शो कर दो, बस जो भी है. अब वो कौन सा दिन क्या है क्या नहीं, इट डजंट डील विद दैट, बट अल्टीमेटली वी नीड टू डील विद दैट, right? We have to deal with that. So for that actually उसके लिए हम लोग को like here we use this Raspberry Pi as the gateway of all the Arduinos, multiple Arduinos, right? So without gateway, if you have Arduino, it doesn't add you anything actually. It doesn't make that smart. And with Arduino, with Raspberry Pi itself, that is also, it doesn't have any sense over there. जब मतलब ग्राउंड में कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि बिना सेना का सेनापति, जहां सेना ही नहीं हो तो सेनापति का कहां से मीनिंग बनेगा? Got it or not? Right? So what else we can do over here? We'll see some more 1 2 3 things here. Next is let's see day of the week. मतलब कौन सा मतलब दिन आता है उस साल में, वो महीना में, उस डेट पे, राइट? सो विल सी डे ऑफ वीक. ये क्या फंक्शन है, ऑलरेडी है कि अंदर में रहने से कन्फ्लिक्ट कर जाएगा. डे ऑफ वीक कुछ, फिर मैं इसको अपना जनरलाइज बना देता हूं. नहीं, ओके वो नहीं है. डे ऑफ वीक कैलेंडर डॉट वीकडे. कौन सा साल यहाँ आ रहा है देखो एक बार, ईयर
मंथ, डे, वो दे देने से वो देगा पूरा। एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो आता रहेगा, वो जस्ट सेल्फ इलस्ट्रेटिव में क्या था, ईयर था ना फर्स्ट, ईयर, मंथ एंड डे। सो 2020 कामा मंथ फोर्थ कामा डेट क्या है 25th। तो वो क्या आना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए, लेकिन ये सैटरडे में नहीं देगा, वो वैल्यूज में देगा आउटपुट, राइट। एंड प्रिंट, क्योंकि अभी ये जस्ट वो दैट डे इट इज अलर्टेड ऑन वीक ऑफ डे ऑफ द वीक एक्चुअली, राइट, उसमें अलर्ट हुआ है वो वेरिएबल में। नाउ वी नीड टू प्रिंट दैट डे ऑफ वीक, राइट, then it will be printing. So I am just highlight make commenting this one कि पूरा कैलेंडर ना दिखे मुझे। ओके, रन। फिफ्थ, फिफ्थ मतलब सैटरडे। सर फिफ्थ मतलब सैटरडे कैसे आएगा, फिफ्थ मतलब फ्राइडे आना चाहिए, मतलब फर्स्ट मंडे, सेकंड ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे अगर फर्स्ट होगा तो फिर ये 5 क्यों आया, 6 आना चाहिए ना। तो एक बार देख लेते हैं कि सपोज मंडे को एक्चुअली कैसा बुला रहा है, एक्चुअली 0 से बुला रहा है या 1 से बुला रहा है, वो देख लेते हैं एक्चुअली। सो प्रिंट कैलेंडर, कैलेंडर डॉट फर्स्ट वीक ऑफ द डे, फर्स्ट वीक डे। ये ऑलरेडी आ गया देखो नीचे, फर्स्ट वीक डे। क्योंकि बहुत सारा चीज याद नहीं रहता है, जब आप लिखते रहेगा तभी वो पॉपअप करेगा, तभी आपको समझ में आएगा हाँ मुझे यही चाहिए, राइट। सो एंटर, देन नाउ रन। क्या हुआ, वन सेकेंड, कुछ एरर आ रहा है, सॉरी। ये तो फंक्शन है ना, फर्स्ट वीक डे फंक्शन है ना, देन वी नीड टू ऐड, यस नाउ इट विल करेक्ट, राइट। 0, आप एक बार देख लो, फर्स्ट वीक ऑफ द डे मतलब मंडे आपका हो गया 0। देन आपको फिर से वीक हेडर प्रिंट करता हूं, प्रिंट कैलेंडर डॉट वीक हेडर, वीक हेडर ऑटोमेटिकली आ रहा है देखो वहां, राइट। वीक हेडर उसको भी आपको, बिकॉज इट इज फंक्शन, राइट, वन सेकेंड। वीक हेडर में आपको नंबर भी मेंशन करना होगा, जैसा हम लोग यहाँ किया था, 2 3 जो भी है। सो लेट्स से 3 विथ 3 रन, राइट। सो इससे पता चल रहा है आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इससे वीक हेडर, वीक हेडर यही है। और वो एक्चुअली कैलेंडर फर्स्ट वीक डे, व्हाट इज दैट, 0, 0, इट इज असाइंड टू मंडे। That's why when it comes to Saturday, it will be 5. So Monday 0, 1, 2, 3, 4, 5. When it comes to Saturday, it is 5. Got it or not? For Sunday, it is 6 actually, because it is starting from 0. That's why it is like this. क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो वो पाइथन को बनाया डेवलपर, themselves they have taken this because of some reason actually. कुछ रीजन तो हो ही सकता है, otherwise how they do these things. Got it or not? Right. So you can like when you say, when in your program, when it is internally writing, right, day of the week whatever, so वो number से access कर लेगा अंदर में, right. So वो हमको, but when it show you, then it can even show in these weeks also, in the week header also, right. हमको Monday, Tuesday, Wednesday में बता दो, then that's very fine actually. देन और इसमें एक करते हैं, और एक छोटा सा, लेट्स से लीप ईयर है या नहीं है, कैसा पता चलेगा लीप ईयर, ये मतलब ये कैलेंडर मतलब अभी वही तो एक रहता है ना, लीप ईयर और नॉट, द गिवन ईयर इज वेदर इज लीप और नॉट। सो लेट्स से इज लीप और नॉट, इज लीप
right, is equal to um, calendar dot is, बस वो देखो वहां नीचे में आ गया इज लीप, मतलब वो भी एक फंक्शन है तभी वो आएगा, राइट। आपको जस्ट टाइप करने से वो पता चल जाएगा। एंड जस्ट क्या चाहिए आपको, वहां ईयर दे देना चाहिए कि कौन सा ईयर, वो ईयर इज लीप, वेदर दैट ईयर इज लीप और नॉट, वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट बता देगा आपको। सो लेट्स से 2020 लीप ये या नहीं है पता कर लेंगे। तो अभी तक तो यहाँ प्रिंट प्रिंट का कोई है ही नहीं, जस्ट वी आर कीपिंग द रिजल्ट इन इज लीप। सो वी नीड टू से print and is leap, then you see here true, yes 2020 it is leap year। 2019 देख लेते एक बार, false, राइट। तो लीप ईयर कितना साल में एक बार आएगा, 4 इयर्स में एक बार आएगा। तो इस हिसाब से कौन सा लीप ईयर होना चाहिए, 2020 लीप ईयर मतलब 2000 शायद 16 ट्रू, राइट। 4 इयर्स में 17, सर एक बार देख लेते 17 है कि नहीं, फिर भी चेक करना चाहते हैं कि लीप ईयर वाले हम लोग को सच बता रहे या गलत बता रहे, राइट। सो 18 false, 19 also false, 20 it is true। So once in a 4 years it will be a leap year, right? So you whatever you want to access related to calendar you can get it over there। सर लेकिन हमको कैसा पता है कि कैलेंडर्स में ये फंक्शंस होगा, कुछ नहीं, आप जस्ट हेल्प एक रहता है, वो हेल्प में आप टाइप कर देने से आपका सब कुछ आ जाए। हेल्प में जस्ट कैलेंडर कर दो, कैलेंडर का रिलेटेड एक्चुअली फंक्शंस क्या क्या है, एक छोटा छोटा एग्जांपल्स के साथ आपको वहां मिल जाएगा। गॉट इट और नॉट, छोटा छोटा एग्जांपल्स के साथ आपको मिल जाएगी। यू जस्ट यू नीड टू हेल्प इट, यू नीड टू आस्क द हेल्प बाय जस्ट सेइंग कैलेंडर हेल्प, so that you see all the information related to calendar over there। Because see I know C, I know little bit of CPP and Java, some basics, right? And more upon that what is that MATLAB, right? And NS2 it's a communication actually simulation language। so इसे देखने से एक्चुअली बहुत कुछ लैंग्वेजेस पता है, जितना मुझे एक्चुअली इंडिया के लैंग्वेजेस के बारे में पता है, राइट। सो कैसा मतलब याद रखेगा कोई भी, राइट। मैं भी याद नहीं रखता हूँ, जस्ट थिंक इट इज दैट व्हाटएवर आई नीड टू जस्ट need to go to help, because in all the programming languages there will be a tab which is help, which will be more emphasized actually। See, so whatever function you want to know about, or you want to build some application over there, you need to go, you need to open the help tab, and over you just type whatever you need। I need some calendar, I want to know about import function, how it can be written, I want to know। so each and everything वो प्रोग्राम में जो जो चीज इस्तेमाल हुआ है ना, सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। It's just like the last page of your book, राइट। लास्ट पेज अपेंडिक्स में क्या रहता है आपको कि एक एक वर्ड कैपिटल ये एक दे देता है, ये का रिलेटेड में जितना भी फंक्शंस उसमें यूज किया गया वो बुक में सबका मीनिंग सब वहां आ जाएगा आपको कि वो कौन सा पेज में है एक्चुअली उसका इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, राइट। तो आपको एक कुछ एक वर्ड के बारे में पता करना चाहिए, जैसा कि एक लाइक मान लीजिए जनरल वर्ड एक फ्रीक्वेंसी, बट यू डोंट नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो पूरा बुक पढ़ेगा क्या फ्रीक्वेंसी के लिए, यू जस्ट नीड टू go like last pages of your book, and you just see where is frequency, then it will be mentioning over there the in which page the it is clearly mentioned about the frequency, right। you just go to that particular page and you just go through that, there you can get what is frequency actually। जब आपको कुछ पता ही नहीं frequency के बारे में, you are entirely new for that word, राइट। सेम यहाँ पे भी आपको कुछ कैलेंडर चाहिए, आपको मतलब आपका एप्लीकेशन डेवलप करने में आपको कैलेंडर चाहिए, then you just need to go to help and you need to access over there। so हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ पाइथन नाउ सर्च फॉर पाइथन का शास्त्रा, बिग शास्त्रा कहाँ मिलेगा, अमेजॉन गूगल, मतलब कहाँ मिलेगा वो, खरीदो 1000 रुपीज 2000 रुपीज ना,
right? That is completely wrong process actually. Then वो जब आएगा ना, right, when yeah, you happily you pay 1,000 rupees for that book and you receive it, and you see that proudly there 1,000, more than 1,000, 1,100 pages will be there, और उसको देखे आपको बड़ी बड़ी खुशी होगा कि हाँ, आई एम गोइंग टू रीड दिस 1,100 पेजेस एक्चुअली. फर्स्ट दिन में 2 पेजेस पढ़ेगा और नींद आएगा, उसी बुक को थकिया बनाएगा, सोएगा, बस और कुछ नहीं. उसके बाद उसको कभी देखेगा भी नहीं. और जब भी कुछ फेस्टिवल वगैरह कुछ आता है, उसको 2-3-4 अगरबत्तियां दिखा देंगे कि खुश रहे, और हम भी खुश रहे अपना जगह कि वो बुक को खरीद लिया, राइट. So here I want to show you one more thing. How many leap days are there from this year to this year? Suppose let's say मुझे पता करना है 2000 year to 2020. How many leap years are there actually? कितना leap years होंगे, देखेंगे एक बार. How many leap years, यार हाउ मेनी लीप, ठीक है खत्म कर देते हैं, क्या है कितना बड़ा बड़ा करेंगे. कैलेंडर डॉट लीप डेज, देखो यहाँ आ गए ऑलरेडी. सी मैं जस्ट सॉरी, मेरा यहाँ कैप्स बटन प्रेस हो गया, फिर भी एक्चुअली इट इज डायरेक्टिंग यू एक्चुअली with this LEA, how many things actually they are there, right? इससे तो आपको पता ही चल जाएगा. See, it is not this one HTML तो मेरा नहीं है, HTML कैलेंडर है, टेक्स्ट कैलेंडर जो भी है यहाँ, right? So वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे चाहिए लीप डेज. How many leap, Y1 and Y2, and here Y1 Y2 means in between 2 years, right? Let's say 2000 to 2020, right? So exactly this one, how many leap days in this one. This it was clearly shown actually. Y1 Y2, Y1 it is actually 2000 and comma 2020, right? देखते हैं अभी क्या प्रिंट करेगा ये. और see you can just comment all these things. क्यों, कोई जरूरत नहीं हमें कोई सब, right? Run. Oh sorry. See, ये गलतियां तो हमेशा होती रहती है. What I did here, calendly how many leap days from 2000 to 2020, वो जो रिजल्ट है उसको पकड़ा दिया मैं एक वेरिएबल को. Actually I have assigned to one variable and now I am not print that actually. So जब प्रिंट ही नहीं किया, आउटपुट में क्या क्या दिखेगा आपको? प्रिंट, सॉरी, print and how many leap, right? अब ये दिखाएगा कितना है. 5, 2000 to 2020 there are 5 leap years were there actually. 5 leap days मतलब एक ही चीज ज्यादा आता है, वो ये एक दिन ज्यादा आता है एक्चुअली. लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का डिफरेंस कितना है? ओनली 1 day. What is that? February 29th, right? So the day, how many leap days means extra days in a calendar year from 2020 to 2000 to 2020, there are 5 leap years are there actually, right? And आपको पता करना है तो कौन सा है वो. Actually you just need to keep that year and say whether it is true or false, right? In that way you can see over whether the given year it is leap or not. You can access over that. But thing it is that actually ये बोलने का actually ये चीज को डिस्कस करने का एक ही चीज है, because while uploading the data we need to upload the data along with date, year, timestamp, everything it is required, so that when you access the things, or when you see over there, you can see that okay, this data belongs to that year actually. Got it or not? So nowadays database, it is very 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 important, right? Suppose okay, which may be irrelevant for here, but I want to tell you one thing. Once I was there in
in 2015, I think. So there, I was there in Guwahati. There I used to take, I was working somewhere actually, but in private I used to take GATE classes over there. Right, GATE basically for BTech students to go for higher education like MTech in IITs or for PSU jobs also. Right, GATE. So few of my students, they came to me, sir. Actually, we are formed a committee. Like we were this year, committee given to us to organize our uh, uh, like what is that festival day of college, some function kind of thing. Let's say some tech fest, right? Each and every college, they have their own tech fest. In that, students committee plays a major role over there, but they need some funding, right? So they asked me, "Bhai, dekho, see, I can't pay that much. Okay, whatever I pay around 10,000 rupees. But I have some sound contacts, which is ONGC. Few days, actually, they were in touch with me. So I thought to take them to ONGC over there. So I have taken them to ONGC. ONGC people, they asked me one thing. Okay, we pay 2 to 3 lakhs. There is no issue. We can fund that. But in return, what these people can do for us? Then मैं बोला सर स्टूडेंट से तो क्या करेंगे आपके लिए, right? But see, they told, अरे why can't sir ask them to install their weather station at their home itself or in their college and ask them to give the data to us. See, because environmental data, it's like the database itself, it is very valuable thing. If you install some your weather station somewhere around your home or in your education institute, whatever, but when you collect the data of, let's say, past 5 years, past 2 years, past 3 years, and some people, they are very much interested of that data actually, because to do something. Kali dekha tha maine. In yesterday's news, I have seen that. We have only 2 minutes left. Yes, sir. Yes, sir. IIT Roorkee professor, actually he built an software. वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसको इमेज अंदर में दे दो, उसका एक मतलब आपका एक्सरे का इमेज है, जो इमेज को दे दो इनपुट, एंड आउटपुट में वो बताएगा उसको कोरोना है कि नहीं है. गॉट इट और नॉट? सी, देन वो कैसा बनाया, राइट? क्या लोगों का मतलब अभी जाके एक्सरे निकालना स्टार्ट किया क्या? नहीं, बिकॉज ही एक्सेस टू वन डेटाबेस फ्रॉम सम फॉरेन लाइक body actually, right? They have supplied him around thousands of x-ray images, and with that actually he experimented actually कि हाँ कौन सा फील्ड कहाँ क्या करना चाहिए, right? Same thing in the complete entire country. Yes, you belongs to somewhere Indore and I belongs to somewhere Hyderabad, someone belongs to somewhere Mumbai, Uttarakhand, Delhi, like, okay, so that means what? We are collecting samples from each and every part of India. And when we combine all these samples together, which forms a very huge database, and over that we can observe that how climate changes are going on, right? So yes, these all are very important aspects, but हम लोग को क्या बहुत छोटा छोटा लगता है सब चीज, but they are very important things. Got it or not? Okay, thank you. We'll see in next class. So that's why you start doing something, build something on your own, and which will be helpful for entire globe, not only you, not only me.